So, welcome everyone. This is Gift Call Wednesday, and all of you know my name is Monica Jain, and I'm an Access Conscious Certified Facilitator. So, the topic for today call, which showed up, is like, what is choice? तो अगर मैं आपसे देखो, सब हम एक्सेस में कहते हैं आप चूज करो, मतलब चॉइस कर लो, या चूज जस्ट व्हाट इज चॉइस. तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज चॉइस फॉर यू, व्हाट हैव यू डिफाइंड एज चॉइस. अगर आपसे कोई कहे तुम क्लास चूज कर लो, पैसे आ जाएंगे, या कुछ चूज तो करो. कितनी बार हम चॉइस नहीं करते कि ये राइट चॉइस होगी या रॉन्ग चॉइस होगी. हम खुद ही सोचते करें मैं चूज करेंगे तो सही रहेगा कि गलत रहेगा. तो उसी थिंकिंग में रह जाते हैं, फिर हम चॉइस नहीं करते हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं, जो भी लोग कॉल पे हैं, आपके लिए क्या है चॉइस? व्हाट इज चॉइस फॉर यू? सबसे पहले फाउंडेशन करना। सबसे पहले फाउंडेशन करा, बिल्कुल सही. दैट इज ट्रू. जैसे गैरी कहता है, मैंने सुबह लाइक आई वाज सिटिंग विद माई सेल्फ, चॉइस क्रिएट. तो अगर मैं आपसे बोलती हूँ चॉइस क्रिएट, तो उससे क्या आता है कि लाइक पहले हम चॉइस करेंगे, फिर चीजें आएंगी. तो सबसे पहले व्हाट हमें करना क्या है? वी हैव टू चूज, स्टार्ट चूजिंग फॉर यू. तो अभी तो आप सब लोगों को पता है कि हम लोग बिग फाइव के साथ सारी क्लियरिंग्स कर रहे हैं. तो बिग फाइव में है, फर्स्ट इज पीआर, प्रिजम्पटिव रियलिटी. सेकंड इज नॉर, नीड ऑफ रिएक्टिव रियलिटी. थर्ड इज नॉर स्लाइम. फोर्थ इज एआई एक्चुअलाइजर्स. एंड फिफ्थ इज द अनफुलफिल्ड सेवियर ऑन ऑफ पीपल और मैनकाइंड. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ यू वुड लाइक टू ट्रूली क्रिएट योर लाइफ टुडे, व्हाट वुड यू चूज राइट अवे? कोई आंसर उसके लिए आपको लगता है कि कोई एनर्जी है, या कहीं कुछ समझ कि कोई क्लैरिटी चाहिए? कुछ एनर्जी तो है लेकिन उसको हम कॉग्निटाइज नहीं कर पा रहे. एवरीथिंग दैट इज, विल यू डिस्टेंस ऑन दैट प्लीज? राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉट पॉक, ऑल नाइन शॉर्ट बॉयज फॉर हार्ट एंड लंग. व्हाट इफ चॉइस कैन बी एज सिंपल एज ब्रीदिंग? आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपने कहा चॉइस करना या चूज करने को डिफिकल्टी बना लिया अपने लिए, and everywhere you're trying to make all the right choices and avoiding choosing in that process. Will you destroying all the time because you will choose? Right, wrong, good, bad, pot, puck, all in short, boys, for millions. How much judgment are you using to not have the choice you could be choosing? How much judgment are you using to not have or make a choice you could be choosing? Everything that is in all the big five. Will you destroying all the time because you will choose? Right, wrong, good, bad, what, what, all नहीं शॉर्ट बॉयज फॉर बात इन. तो आप में से कितने लोग हैं जो चॉइस करने से पहले सोचते हैं कि rather than asking a question, what will this choice create? How many of you go into the rightness or the wrongness of that choice? Any one of you? मतलब जब भी चूज करना होता है, क्वेश्चन पूछने के बजाय हम कितनी बार ये सोचते हैं कि सही रहेगा कि गलत रहेगा, इसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या रहेगा. और कहीं कभी कभी तो ऐसा होता है कि छोटी छोटी चॉइसेस हम कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ी चॉइस करने का होता है तो हम कहते हैं नहीं, अभी मतलब वहां पे हमें क्लैरिटी नहीं आ पाती कि हमें करना है कि नहीं करना है. So what if you start asking question with every choice that you make? What will this choice create? अगर आप एक क्वेश्चन खुद से पूछोगे तो आपको वहां पे लाइटनेस और अवेयरनेस दोनों ही आ जाएंगे. एक क्वेश्चन और है कि भाई चूज दिस, विल दिस क्रिएट माई फ्यूचर और डिस्ट्रॉय माई फ्यूचर? तो ये दोनों भी क्वेश्चन अभी किसी भी चॉइस के साथ पूछ सकते हैं. तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि लाइक यू हैव टू चूज समथिंग, तो हाउ डू यू गो अबाउट दैट? हाउ डू यू, आपका थॉट प्रोसेस, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पहले दिमाग में थॉट प्रोसेस बहुत सारे होते हैं हमारे. तो हाउ डू यू गो अबाउट दैट? डू यू गो टू अ क्वेश्चन और डू यू गो टू द जजमेंट ऑफ राइटनेस और रॉन्गनेस? हाउ डू यू गो अबाउट दैट? एनी वन ऑफ यू? मोनिका जी पहले करते थे, लेकिन एक्सेस में आए बाद नहीं करते. नथिंग रॉन्ग एंड नथिंग राइट. बिल्कुल. तो तो अब ऐसे आज करते हैं यूनिवर्स से. जैसे मुझे फाउंडेशन करना है, तो मैंने आज किया है कि हम्म, कितना जल्दी मैं कर पाऊँ. हाँ,
तो आपने उसके तो लिए क्या क्वेश्चन प्लीज बनाया, मुझे क्वेश्चन बता सकते हो? व्हाट वुड यू प्लीज टेक? प्लीज क्रिएट यूनिवर्स फॉर मी फाउंडेशन क्लास एज उसके सून लिए आप एज एक पॉसिबल. क्वेश्चन और कर सकते हो. व्हाट वुड यू टेक फॉर मी टू डू अ फाउंडेशन क्लास विद टोटल ईज? ओके. या व्हाट आर द इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज ऑफ मी क्रिएटिंग एंड चूजिंग अ फाउंडेशन क्लास विद टोटल ईज? जब आप चूज करोगे फाउंडेशन क्लास, देन आस्क दैट क्लास टू क्रिएट यू मनी. हम कितनी बार कहते हैं ना कि हमारे पास लाइक एक होता है ना कि पहले आप चॉइस करोगे एंड देन यू आस्क दैट चॉइस टू आल्सो क्रिएट यू मनी फॉर यू. तो ये जो दो क्वेश्चन है, इससे आप अपनी फाउंडेशन क्लास को जल्दी से एक्चुअलाइज कर पाओगे. गॉट दैट. ठीक है? ओके. एनी वन ऑफ यू? चॉइस. व्हाट इज चॉइस फॉर यू? हाउ मच डू यू अवॉइड और यू डिफेंड द चॉइस? इतना सारा. एवरीथिंग दैट इज कैन बी डिस्ट्राइंग फ्रॉम दैट फील्ड. Right, wrong, good, bad, bad, walk, all nations, boys, perhaps, and what if? Okay, so this is different. I'm talking about differently. How many reasons and justifications do you use to validate your choices, to defend your choices? मैं चूज कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, या मैं नहीं कर रही हूँ तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? Everything that is, will you destroy all that, please? Right, wrong, good, bad, bad, walk, all nations, boys, perhaps, and what can you choose that no one else can choose? What is available to you that you haven't considered yet? These are the few questions that you can ask on a daily basis to yourself. And if you start asking these questions, more choices, more possibilities open up in your life. Anybody has a question? What is showing up? No questions today? Awesome. सबके सब एसओपी क्लास में टैप कर रहे हैं जो कल स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए किसी के पास आपके क्वेश्चन भी नहीं है. ओके. So what would you like to talk about? Anything that is showing up for you? How many judgments do you have of money, business, and your life? A lot, a little, or maybe none. Everything that is can be distinct from that, please. Right, wrong, good, bad, what, all nations, boys, for opinion. What do you love about judging yourself? And are you using that judgment as a motivating factor to move forward? Many people do that. They judge themselves so that they can outcreate or overcome that. So have you been doing self-judgment or judgment of your business, of the money you have, everything that is, and everything that brought up, we are distracting to all the times about being please. Right, wrong, goodbye, spot box, all in short spoils for us and beyond. So when I say judging yourself, वो जो judgments है उसमें से कितनी आपकी है और कितनी आपकी, like you are aware of people's judgment of you. Everything that is, like everywhere you have made your awareness of other people's judgment as your judgment, will you destroy and control the times of opulently? Right, wrong, good, bad, spot box, all in short, spoils, perhaps, and beyond. So what have you decided and concluded cannot change in this lifetime?
What have you accepted that can be an interesting point of view as well? All that is, we'll be destroying from that. Right, wrong, good, bad, what, work, all nine shorts, voice, so and beyond. No questions for today. Yes, Sandhya? I make a choice of doing something and then I step back. Hmm. But most of the time I do this. Mm-hmm. So So when you make a choice, do you Hmm. go into the rightness or the wrongness of your choice? no, I और just say, okay. या फिर आपको लगता है कि जब तक उसकी वैलिडेशन नहीं मिलेगी, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे? और वैलिडेशन को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? By acknowledging yourself. So all the big Seeing five that you're using to still live for and by the validation or for the people we are destroying for all the time the God feeling free. yes, please. Right, wrong, good, bad, what, work, all nine shorts of parts of arts and beyond, because it is the validation that keeps you stuck in this reality. हम जो भी कर रहे हैं या हम जो भी जो हम काम कर रहे हैं या जो हम चूज कर रहे हैं, मोस्टली हम वो वैलिडेशन के लिए कर रहे हैं. अगर सपोज फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स आपको किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए और आपको जो करना अच्छा, जो आपको करने में अच्छा लग रहा है, आप वो करें जिसमें आपको बस बहुत अंदर से पीस मिल रहा है या कुछ अच्छा लग रहा है, तो फिर उसमें आपको किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए होती. कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा कि जिसमें आपको अंदर से बहुत अच्छा लगता है और फिर आप वो करते हो, जिसमें आपकी बॉडी भी हैप्पी रहती है और आप भी हैप्पी रहती है, जिसमें आपको लाइटनेस आती है. वहां पे आप देखोगे आप खुद को एक्नॉलेज करते जाते हो और आपकी बीइंग को आप स्ट्रेंथन करते जाते हो. तो जब तक हम वैलिडेशन के लूप में रहते हैं, जब तक हम वैलिडेशन की उसमें कि हमें वैलिडेशन नीड होती है, जब तक वैलिडेशन की, तब तक हम खुद के लिए नहीं कर रहे. मतलब इट्स लाइक एवरी टाइम यू हैव जस्ट सॉरी, अगर आप एक्नॉलेजमेंट खुद के लिए स्टार्ट कर दोगे तो वैलिडेशन की नीड कम होती जाएगी. उसके लिए खुद को रोज एक्नॉलेज करना होगा, और ये आप खुद के लिए खुद ही कर सकते हैं, कोई आपके लिए नहीं कर सकता. Nobody can do that for you. You have to start acknowledging yourself as a magnanimous being, as the infinite being that you truly are. In everything that doesn't allow that, will you destroy all the time the God silently? Yes, please. Right, wrong, good, bad, pot, walk, all I short, boys, forward, and beyond. So, Mahi, would you like to unmute and ask? Sorry, can you please repeat yourself? So you asked like, what can I ask for my career and my entrance exams? You want to have a clearing statement for that? Ma'am, your voice is breaking. Actually, is it breaking for everyone or is it just for Mahi? Can you hear me? Everyone, can you hear me clearly? We can hear you, Monica ji. Okay, thank It's you. only for her. Yeah. Okay, thank you. So Mahi, I can I'll do the clearing and you can also listen to the recording. It will really help you. First of all, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको clarity नहीं आ रही किसी भी चीज में, it can be any choice, it can be any situation in your life, it can be anything. Ask the question, what energy, space, consciousness, and choice can my body and I be to have total clarity and ease with all of this? And everything that doesn't allow that, times the godzillion, I destroyed it all. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all in short, boys, forwards, and beyond. जब हम ये क्लियरिंग स्टेटमेंट करते हैं, we are asking clarity, more clarity and more ease. Because sometimes when your awareness increases, it is not ease for you. It can become uncomfortable as well. So you have to ask for both clarity and ease. And also, if I choose this,
will this create my future? If I choose this, will this destroy my future? These are the two questions जहाँ पे आप energy को light and heavy कर सकते हैं. And the more you do that, the more it will be easier to know which way to go. Definitely, ma'am. I did this thing. What is light for me? What is not? And what would take create more greater possibilities for my life? I did everything, but then whenever my exam happened and I just left for some, margins. So तो वो एक बहुत बुरा सा भी लगता है कि what to do now. As I told you earlier also for the same. हाँ, उस time पे then you have to ask the question, now what else is possible that I haven't considered yet? Because it might be that there is something more that the universe Yeah. wants to contribute to you. I would like to ask you, how much are you willing to receive the contribution the universe is trying to give to you? I would like to receive, like I'm receiving, I'm telling universe every day from, past 1 week that I'm willing to receive everything. I'm willing to receive everything. It's just whenever that receiving comes, and I don't know how this happens, but sometimes क्या होता है कि नहीं चाहिए वाली चीज आ जाती है. तो वो जो नहीं चाहिए वो वाला भी चेक करो कि वो किसका पॉइंट ऑफ व्यू है. See, we are living in a family. We have people around us. Sometimes the people around us, it can be family, it can be friends even. उनका रिसीविंग का लेवल उतना नहीं होता तो हम खुद को भी रिसीव करना बंद कर देते हैं, यूनिवर्स से रिसीव करना कम कर देते हैं. तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप किसको इतना ज्यादा बता रहे हो या दे रहे हो जो रिसीव नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आप खुद की रिसीविंग को भी बंद करते जा रहे हो. A lot of people. Good choice. What would you like to choose now? I would like to destroy everyone's point of view here. That is aligning with Yeah. this approach. Yes, everything that is, and all the big fives creating that will be destroying for all the times of possibility. Yes. Right, wrong, good, bad, pot, pop, all in short, boys, for and beyond. मेरे साथ बड़ा हो रहा है, like interesting मुझे लगता था कि oh I have this, let me share with people. Oh I normally कोई नई चीज होती है ना, let me share it. कोई नया process आया, नहीं नए process की बात नहीं करी, कोई चीज लाइफ में नई आई है, कुछ receiving नहीं है, oh let me share it with people. Then there comes a point when people can't receive that much how much you're receiving. True. This And happens then- with me. और हम क्या करते हैं? Then we also stop receiving. Okay. Just for me, just for fun, never tell anyone. So there are some things that are just for you. Also, if you really like to share it with people, share with people who do not judge you, who have your back. That's So true. universe, send me more people how- who have my back in totality, and then share it all. Yes. So how Thank do we you. know the people who have our back? आपको ना एक संजय जी वो एक स्पेस होता है जहाँ पे आप अपने आप को बंद नहीं करते हो, आपको कुछ और नहीं बनना पड़ता, मतलब यू आर सो वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन दैट यू कैन बी जस्ट यू. You don't have to like stop you, hide you, or even mask yourself up. Because मैं अगर बात करती हूँ with our family or with the people around us, sometimes we have to, being you is like so uncomfortable with other people, for other people as well. So we have to become what can easily be adaptable with other people. There are few friends in which you feel like आपको लगता है यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो, nobody will judge you, nobody, सब they have your back as well as they have their back. So if you have 2 or 3 people in this whole or on this whole planet who have your back, you're really really gifted. So ask the universe, send me more people who have my back, who with whom I can be just me. I don't have to hide me or शट डाउन. अब हमें शट डाउन नहीं करना पड़ता, वहां पे आप कुछ भी हो, लाइक आप वहां पे जैसे हो वैसे ही हो, आपको परफेक्शनिज्म नहीं करना पड़ेगा. नहीं मेरे को तो ये भी पता है वो भी पता है, नहीं आप जैसे वैसे हो. या have a question. Can I ask बताइए. हाँ जी Rashmi? बताइए. या रश्मि. Many times our closest friends and families, हम्म
whom we cannot let go of, are the ones who judge us the most, and you know, so उस वक्त who don't have our back, मतलब तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? How do we be in allowance with that? How do we cope up living with them all the time without being affected? वहां पे पहली बात तो सी, इफ जैसे कि आपने बोला कि हम लोगों के साथ रह रहे हैं और वहां पे वो लोग हमें जज करते हैं, राइट? रश्मि जी कहाँ गए आप? यहाँ आ रहे हैं आप। तो इफ Yes. यू आर लिविंग विद पीपल जो आपको जज कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो आप जितना जजमेंट रिसीव करते हो उतने पैसे बनाते हैं बैंक में। हाँ, अब क्या आप म्यूट पे चले गए? प्लीज म्यूट से हटाओ अपने आपको। Okay, that's really interesting. Interesting, yes, because this is the concept that I learn in Access. If you start receiving judgment, like आप judgment के साथ align, agree और resist और react नहीं करते हो, because लोग आपको judge करते हैं just to control you. सपोज ये कह देगा कि रश्मि अब ये कपड़े तुम पे अच्छे नहीं लग रहे, ये इस तरह के बाल तुम पे अच्छे लग रहे, तो आप जाके उसको चेंज करते हो, अपने कुछ अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करते हो, तो लोग आपको जज करते हैं सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए। तो जब आप जजमेंट के साथ ना तो अलाइन अग्री करोगे ना रेजिस्ट एंड रिएक्ट करोगे, then you start receiving that judgment and that judgment creates more money in your bank account. Then you can also see, where do you love to be controlled by the people, or are you still playing a victim in your own life? Everything that is in all the big five, will you destroy to all the times without thinking, please? Right, wrong, good, bad, pok, online shots, boys, forwards, and beyond. So if I talk about myself, I also live in a joint family, but what if you become something that is not affected or in the effect of other people's reality? तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ, एज एन इन्फिनिट बीइंग, हम कहते हैं ना कि एज एन इन्फिनिट बीइंग हम ओवरवेलम नहीं हो सकते या थॉट फीलिंग्स इमोशंस वर्क नहीं करते, बट व्हेन वी लिव इन दिस रियलिटी we are surrounded by many people who would judge us. So then ask yourself to be more space. How much space can I occupy? जितना आप स्पेस करते जाओगे उतना आपके लिए it would be easy to receive judgments even more. Does that help your question? Thank Please you so much. elaborate this, ma'am. Anything else with your question, Rashmi? I guess fine. Okay. I would also be posting the recording in the group, so let me know which group did you receive the Zoom link. If it is the happiness group, I will be posting the recording as well then. It's the Bars Practitioners Ahmedabad. I will also post the recording over there. Thank you. Welcome. Yes, Mamta? मैम अभी आपने बोला ना जैसे स्पेस के लिए, तो वो प्लीज आप एलिब्रेट कर देंगे कि कैसे हम अपने स्पेस को इंक्रीज कर देंगे? Suppose जैसे as a इसमें आप आप मुझे पहले बताओ कि is your being inside your body or is your body inside your being? ये मुझे पता है, मैंने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा, इसके लिए दिमाग चलाना पड़ता थोड़ा थोड़ा। Body inside the being. Yes, the body is inside the being. Being infinite होता है, ठीक है? और हमारी बॉडी, our body is like this much, मतलब मैं इतनी भी नहीं कह रही, ठीक है, इतनी ठीक है यार, बहुत है, and the being is infinite, ठीक है? So when you ask your being to expand, body तो होती रहती है ना, when your being expands, it becomes more infinite, it becomes more space. So when somebody throws a judgment on you or do a judgment on you, that judgment passes through you without sticking to you. So when you ask, okay, how much space can you occupy? A being can occupy the entire universe. यस So जितना आप क्योंकि हम finite जब होते हैं, जब हम contract करते हैं, तब it's like everything is affecting you. राइट So the more infinite, when you become more infinite, things seems to affect you less. And also then ask to increase your allowance every day. Okay? जी
बट मैं वो हाँ उस मोमेंट पे जो चीज हो ना वो एकदम क्लिक कर जाए, वो एक है। आप कुछ मतलब करेंगे क्योंकि हम थोड़ी देर बाद तो आ जाते हैं, क्योंकि अब हम चेंज के उसमें है कि चेंज करना है अपने आप को, नॉट आई एम नॉट लाइक दिस, आई एम नॉट बिहेविंग लाइक दिस। तो वो तो सब चीजें आ जाती हैं, बट वो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन और मतलब जिस टाइम पर वो सिचुएशन है और उसी टाइम पर हमें वो चीज कुछ क्लिक कर जाए कि नहीं, क्योंकि वो हो जाता है थोड़ा रोना धोना है, नॉट ड्रामा ड्रामा। नहीं, वो देखो उसमें भी खुद से पूछो मुझे रोने धोने में, मुझे रोने धोने में क्या अच्छा लगता है। कभी कभी देखो कोई चीज लग जाए घर में कुछ, कभी कभी खुद को वो चीज भी अच्छी लग रही है तो 2 2 मिनट 3 मिनट उसमें रह के बाद वापस निकल आओ। कि आप तो उसको भी आप रॉन्गनेस ना उस बनाओ, रोना धोना भी मचा लो, और फिर जो चाहिए वो भी ले लो, फिर उसको रॉन्गनेस भी मत बनाओ। Sometimes people take as a weapon they एडवांटेज use ऑफ Rona Dhona. हाँ हाँ, बट वो तो सब नॉट, करते हैं। हम लोग के अगर डिसएडवांटेज कोई सामने से कि करते जा रहे हैं हम सबके लिए और देन हम सुनते भी जा रहे हैं, तो इट्स नॉट राइट ना। देन यू देखो, अलाउंस का मतलब ये नहीं है कि यू बिकम अ डोरमैट, नो। कोई मैम, यू यू हैव टू सी कि कहाँ पे आप खुद को गिव अप कर रहे हो लोगों के लिए। दैट इज द फिफ्थ एलिमेंट। यू डोंट हैव टू सेव अदर पीपल फ्रॉम देयर इंसैनिटी, फ्रॉम द स्टूपिडिटी। हम जब हमें लगता है ना कि आई नो, या मुझे इससे ज्यादा पता है, या मैं इसकी हेल्प कर सकती हूँ, दैट इज द फिफ्थ एलिमेंट। जी एंड देन पीपल ट्राई टू स्टेप ओवर यू, और टेक, मतलब क्या कहते हैं, दूसरा वर्ड मुझे नहीं आ रहा, टेक एडवांटेज ऑफ यू। जी मैम, उसी टाइम के लिए मैं चाहती हूँ कि मतलब क्या चीज़ हमें याद है कि लाइक हमारे All the big five reading this, I destroying it all times I got together. थैंक यू मैम। And और मैम also I आपने would, जो मुझे गाइड किया था ना कि चूज फॉर योर सेल्फ एंड हाँ इट विल गिव यू मोर हैप्पीनेस, तो इट्स लाइक ऑसम। मैंने भी एक अपना योगा स्टार्ट किया है, योगा ग्रुप। एंड मतलब लाइक अब मुझे भी कुछ फील होने लगे, लाइक मैंने अपने लिए चूज किया है, तो इट्स वेरी गुड। और मतलब आपको थैंक यू बोलना था, इसीलिए मैंने जस्ट आज जो ग्रुप ज्वाइन किया था, वो तो मैम ने क्वेश्चन किया तो मेरे को भी क्वेश्चन क्लिक हो गया कि ऐसा बिल्कुल। भी है कि मेरे साथ भी बहुत टाइम ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मैं कर करके थक गई हूँ और सामने से कभी अप्रिसिएशन तो मिलता ही नहीं है, और ऊपर से इसीलिए अप्रिसिएशन खुद को खुद का ही करना है, किसी और के लिए वेट नहीं करना है। Start सो मच। appreciating you and acknowledging you. थैंक यू मैम, एंड आपका जो कंट्रीब्यूशन है मैम, इट्स ऑसम, थैंक यू सो Thank you मच। so कि much for आप कैसे receiving that. हमें मतलब बोलते हो जैसे कि अपने लिए हम डोर्स ओपन कर सकते हैं, लाइक आई हैव बिल्कुल कर एटलीस्ट। सकते हैं। जी, सो थैंक यू सो मच मैम। You're welcome. Yes, Vicky. So, of course, listening to all these things and going through all the trainings that I go through, Access Ma'am, I have become a completely different person. Like, I don't go into my wrongness. I don't shy away from saying my thing. I don't say, get afraid of doing things which I was so much afraid of doing things earlier. And I don't feel, that judgments will stop me anyway. Now people around me are looking at me like, who is this person? ये है कौन, ये And करती क्या है, इससे कुछ फर्क क्या नहीं पड़ता। exactly. And I'm not, choice, as you said, I'm not looking at the repercussions of what, I'm just expressing myself, what I feel right at this moment. That you cannot, just push over me all the time. Whatever my feelings were there inside me, I was not expressing fully because I was somewhere afraid. But now I do. When I don't go and tell anyone, but when someone is asking me and telling me, why are you doing this? And it will have long term effect, it will do this, that, and I was like, what the hell is this? You are like, I'm not the only one who has taken the take of being the responsible one. It's okay if I'm not responsible, and it's okay if the effects are going to be that way. We all will bear with. So for a moment I got into my wrongness, but then I quickly came over, because it has been a habit now that I don't get into my wrongness now. If earlier, if I say even a word, I would go into depths of my wrongness. But now I want to ask, if I go into a bit of also wrongness, what should I do at that time? Maybe you can give yourself more space. Like जैसे आप कह रहे हो ना कि पहले आप बहुत ज्यादा जाते थे, अभी बहुत कम जाते हो,
तो जैसे बाय प्रैक्टिस ये और वो इवॉल्व होगा। Hmm. तो अभी जो थोड़ा सा बचा है, जितना आप उसको और स्पेस दोगे वो और इजीली और क्विकली खत्म भी हो जाएगा। Okay. So the more you start acknowledging the being that you are, Mm-hmm. and the more you function from the kingdom of we, Mm-hmm. and trust your awareness more and more. That's the thing. Start Actually, this trusting is your awareness. yeah, because you know, I said something to someone, some relative, very close relative, someone over phone who had called me that why are you not coming to our place and all that. I said I don't feel like I'll stay in my this thing. I don't feel like I won't come, and these things have happened in past, and I don't want these things to happen again in past. And this is my choice. I don't want to give an explanation. So after the call, I was mulling over it, and I asked a friend, "Yeah, did I do right?" She told me the मुझे same फोन कर thing. लेते, मैं बता देती गलत था कि सही था। I actually thought कि मैं आपको ही call कर लूं. When I लेकिन asked मुझे her कॉल what कर is, लिया करो। I'll do that. अभी अलग से भी I'll call you. हाँ, So कर she said, लेना what कर is लेना। your soul तो फिर saying? मैं वैलिडेशन दे दूंगी जितनी चाहिए, टेंशन मत लिया करो। Wow, thank you so much. So she You're said me most कि look at your soul. What is it saying? मैंने बोला I think I'm right. You know, that done. It is my choice. Whatever are the repercussions, this is my choice. I'm with it. Well, okay, let it be then. yeah. So it was peaceful. But then वही heart, you know, is too much this thing. यहाँ wavy होता रहता है टेंशन कि नहीं लेने का, सब right. ठीक है, परेशान नहीं सही होने है? का, सब एवरीथिंग इज गुड। Oh, wonderful. Thank you हमें so कोई much. हमें कोई ट्रॉफी लेके नहीं जाने की, ओह हम सबसे बेस्ट थे, नहीं, हम जैसे हम वैसे सही है। Exactly. On the top of that, I'm not taking favor. Like, it's not like I'm Yeah. not doing anything good for anyone, like somebody needing Yeah. and I'm not doing service. I'm not ready to take the service they are offering me. So that is the But you also reason. know the hidden agenda behind that है ना स्वीटी। और ऐसी कैसे हाँ, हो गई स्वीटी, इतनी फिर कैसे हो सकती है? ना 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 ना, ऐसे तो लाउड ही नहीं है स्वीटी, गलत बात, बहुत हाँ। गलत बात है। इतनी अवेयरनेस गलत हो जाएगा ना, बहुत गलत हो जाएगा। Oh, yes. And the second thing is, like in this chaos, atmosphere of chaos, I have been listening a lot about different people. Like different people are coming and saying different things about other people. So somewhere, you know, I to get boiled up कि यार whom to trust and whom not to. So in that situation, how In to that raise my awareness? situation, you have to trust your awareness, and also जो भी कोई लोग आके बोलते हैं उससे हमें मन में इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ही और शी हैज दैट पॉइंट ऑफ व्यू मन में करने का। जितना वो करते जाओगे उतना रियलिटी नहीं बनाओगे उनके साथ, ठीक है? Right, ओके right. Yes, ओके, wonderful. यस आशिरा। I want to add, हम्म, like in our foundation class, you told me the same thing. You can call me for validation. तो जब मुझे चाहिए होता है तो I just याद कर लेती हूँ वो चीज कि अच्छा मिल वो जाता बोला है। था कि कॉल करना है, अच्छा वो तो वहीं से बैठी हुई वैलिडेट कर रही है whether I'll call her or not. तो that is मैंने that. एनर्जेटिकली हाँ कर दिया तुम्हें। I know, मतलब वो कहता अच्छा वो कह रही है कि हाँ आशिता you did right, तो continue. So this happened with me. Awesome. Okay. Any more questions? Okay, so I have this thing that is showing up. I'm not yet confirmed the date. Any one of you is interested in doing 5 elements of intimacy? Like we will be doing 5 calls of that. I haven't decided the date as yet, but it would be in July somewhere. I have to see my schedule. आपको पता है 5 elements of intimacy is honor, trust, allowance, vulnerability, and gratitude. And these are the 5 basic things that create a relationship. So first we have to start that relationship with ourselves. So this is coming up in my awareness since last few days. I would be working on that, setting up a time and the price for that. Let me know आप किसी कौन उसको join करना चाहेगा. It would be in July, I think mid-July, and it will be an online thing. And also, I have a face clip class coming up in Delhi and Talk to the Entities coming up in Mumbai. So if you know anyone who might be interested in joining me in Delhi or Mumbai, please let me know. Thank you. Any more questions for today? Mamta, do you have a question? No. Okay. Thank you everyone for joining me. See you next
you Thanks for your जी contribution. Thank you, ma'am. Thank you Thank you so so much. much. thank you bye bye Thank you. थैंक यू Take care. Thank you. आज आपका ही एप्रिसिएशन का डे था thank you